Hi friends, welcome back. By what the SC said on the Kolkata Medical College case. चलो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? अमेजिंग। हमने वो जो अच्छा हाई कोर्ट देखा था वो। हाई कोर्ट का देखा है, वो इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में आएगा। अब ये भी देखते हैं कि इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। मतलब हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। If women cannot go to a place of work and be safe, then we are denying them the basic conditions of equality. After the principal resigns from this medical college, He sent to another he hospital. is appointed as a principal of another college. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. First, on matters of safety, we are deeply concerned about the fact that there is a virtual absence of safe conditions of work for young doctors across the country, particularly in public hospitals. As we know, these are all young interns, they are residents, senior residents, doctors, and most importantly, women doctors. Yes. Who are subject to of graver dangers and vulnerabilities. Yeah, vulnerable. By virtue of the nature of their Absolutely. because of gender. Most of the young doctors have to put in somewhere 36 hours, Malaya stretch. ये we सब find that there are no duty rooms available, no separate white restrooms hair or duty rooms available for men and women doctors, for the other nursing staff, for the paramedical staff who are also on duty. And therefore, we must evolve a national consensus to ensure that there must be a standard national protocol. Ultimately, what is equality under the Constitution all about? If women cannot go to a place of work and be safe, then we are denying them the basic conditions of equality. And therefore, we are entertaining this, and I'll very shortly share the way we want to proceed with this to ensure that ultimately, it's not that every time that there is a rape or murder that the conscience of the nation is awakened. We have to do something right here and now to ensure that these conditions of safety are maintained in terms of protocols which will not just be on paper, but protocols which will be enforced across India. We are deeply concerned of the fact that the name of the deceased who was assaulted and murdered, the name has been published all over the media. Photographs have been published all over the media. Correct. Video clips, obviously, either before or after the postmortem, have been published. Right. Showing her body, after she was subjected to extremely concerning. Inform your lordships, before the police reached, photos were taken and these were circulated. We didn't allow anything to happen. We cordoned off the area. Is this the way we provide dignity and respect terrible. the privacy of an individual who has lost her life as a young doctor? It appears that the crime was detected in the early hours of the morning. Yes. No, indeed. After the crime was detected in the early hours of the morning, the principal of the hospital tries to pass this off as a suicide. Not true. Her parents are not allowed to see the body. The parents are not allowed to see the body for almost. No, Malak, I'm sorry. Anyway, Malak, this is the impression. Our investigation We'll have to place the facts before your lordships. We have investigated that. This is not correct. After the principal resigns from this medical college, He sent to another hospital. he is appointed as a principal of another college. He doesn't resign. But anyway, be that as At the least, his conduct is under scrutiny, and he's appointed as a principal somewhere else. We have a note on all this missing. The investigation has been handed over to the Bureau of Investigation. Yes, done. करे Yes. तो We सही, want वो उसका CBI तो to file a कुछ नहीं हुआ। status report before this court on Thursday. Today we intend to pass an order. We are setting up, under the authority of this court, a national task force. The national task force will consist of a diverse segment of doctors from different parts of the country. We want them to make us recommendations in regard to the modalities to be followed across India. We're not only talking of the Adhikar Medical College and Hospital, but modalities to be followed all over the country
for ensuring safety at the workplace first and foremost, for which our young doctors, the middle level doctors, the senior doctors are all today on protest and on strike. We would really earnestly appeal to all the doctors that we are here to ensure that their safety and protection is a matter of the highest national concern. Clearly, the autopsy would reveal that this is a case where a doctor has been murdered, where she has been murdered. Yeah. The FIR is registered at 11:45 in the night, Mr. Sibal. Yeah. And who was expected to Yeah. Nobody in the hospital registers the FIR. No. The father registers the. What was the principal or the vice principal? What were the authorities of the hospital doing? No, they wanted a board, we constituted a board. They wanted a magistrate, we got the magistrate. don't need realize time for that registration of FIR. No, let's You don't need a medical board for Yeah, registration of FIR. Mr. Sibal, it is the Application was obligation made of the before the Sialda authorities court. of the hospital. Yeah. The parents are not present in the hospital when the murder takes place. Yes. So one thing, Mr. Sibal, we are very, very concerned. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. I give to your, we have videos of all that happened. People, whether they are doctors, civil society, lawyers, people who are protesting, so long as there is no act of destruction of. We have videos. We agree, Let there not be the power of the state unleashed. on agree. Peaceful protest. Manoj, I agree, and that has not happened. 1 second. We have videos which we will place before your lordship. And Manoj, what happens is political parties get into the act and this is what happens. Medical professionals have become vulnerable to violence. With the involvement of systemic issues for healthcare across the nation, this court has had to intervene. कौन बोल रहा है? Women are at particular risk of sexual and non-sexual violence in these settings. He's reading it. Due to ingrained patriarchal attitudes and biases, Center. relatives of patients are more likely to challenge women medical professionals. In addition to this, female medical professionals also face different forms of sexual violence at the workplace by colleagues, seniors, and persons in authority. शॉकिंग है कि वो जो सिबल जो है वो फिर भी आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश कर रहा है कि भैया हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो बिल्कुल ठीक, आप ये जो बोल रहे हो ये भी गलत है, वो भी गलत है। वो जब बोल रहे थे कि इन जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर थोड़ी कोई गवर्नमेंट को लीश करनी है अपनी एंगर या कुछ। अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है ही रिप्रेजेंट पीपल इन पोजीशन ऑफ पावर, उनको डिफेंड करता है, पैसे बहुत मिलते हैं ना। बट ओवर हियर जो है अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अभी भी जो चीफ जस्टिस हैं, ही इज़ अ इंटेलिजेंट पर्सन एंड क्लियर किया है कि जो प्रॉब्लम्स हुई हैं कि मर्डर होता है इन द मॉर्निंग, एफआईआर रात में होती है, पेरेंट्स लिखवा रहे हैं, पूरी 1 घंटे से ऊपर पेरेंट को बच्चे क्या काम कर रही है, पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे अटैक कर रही है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स नज़र आई थी वही दिखाया कि फ़ोटोज़ जो है उस लड़की की लीक हो गई, क्या क्या कुछ हो गया। कैसे होता है? तो दुख की बात है, ये भी कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोबारा ऐसा ना हो। मगर जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो सही कह रहे हैं कि नेशन को अवेकन करना पड़ता है, मगर फिर भी नेशन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। और उसके पीछे मेरे ख्याल से एक चीज़ है कि जो मेन कल्प्रिट है वो मेन शायद नहीं पकड़े जाते, और दूसरा समय बहुत लगता है डिसीजन आने के लिए। तो अगर ये ऐसा कर दें कि मेन कल्प्रिट को पकड़ें, सीबीआई को और स्ट्रॉन्ग करें और इंडिपेंडेंट करें और बेटर क्या करें। सीबीआई ने सुशांत का जो है अभी तक केस में कुछ पता चला है? क्या किया सीबीआई ने? हाँ, बस सीबीआई दे के लोगों को शांत कर देते। वो सीबीआई के पास मुझे तो अब ये फीलिंग आने लगी है कि सीबीआई का नाम ले लो, जनता शांत हो जाएगी, कुछ देर के बाद भूल जाएगी, कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। जब सुशांत को नहीं मिला तो भैया सिन्हा, सॉरी मुंह से सिन्हा लग गया, जब सुशांत को नहीं मिला तो भाई अब क्या सीबीआई कर रही है? जब दिल्ली में निर्भया के साथ हुआ था लोगों ने कहा था लास्ट होगा वो, फिर ये हो गया। उसके बाद ऑलरेडी कई बहुत सारे हाँ, अपने कमेंट से पता चल रहा था। तो यही है कि गवर्नमेंट को जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तेज़ी करना पड़ेगा, सोसाइटी को देखना पड़ेगा, मतलब हर जगह अवेयरनेस लेके जाने पड़ेगी कि अगर तुम ऐसा करते हो तो उतना डायर कॉन्सिक्वेंस होता है। और उस प्रिंसिपल को तो कई दुनिया जिंदगी भर नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, जिस तरह से उसको नौकरी दे दी है। कोई भैया जो जिस हॉस्पिटल में जाए सब वहाँ से छोड़ के निकल आओ कि भैया ऐसे लोगों के जहाँ हम नहीं करेंगे काम, पेशेंट्स जाना बंद कर दें। ये तो जनता को अब जागरूक होना पड़ेगा, उसको अपनी फाइट खुद लड़नी पड़ेगी ऐसी जगहों पे।
और इस टाइप के गवर्नमेंट को लाते ही क्यों हो जो इतना मतलब इतना हैवानियत वालों लोगों को सपोर्ट कर रही है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।